इंदिरा भाभी गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करो। Good morning, Good ma'am. morning. मैं तो unmuted हूँ. Good morning. इंदिरा भाभी Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good देखा morning, ना, ma'am. yeah, actually the full moon and Good Venus morning. as a planet is so clearly visible right now. I was also watching that from the balcony. Venus तो ऐसे चमक रहा है आज जैसे, and it is the planet of wealth and beauty, abundance, prosperity. So that and moon Deepti, it's together. yellower than the others, right? Yeah. It's yellower than the others. They are white. This is yellow. Yellow to nahi, it is like bright silver. I mean, you don't have that star tracker light on your app like phone pay. I don't. है ना? अच्छा हाँ. So Yeah. you have to download that star tracker light. I have that. You had told us. And then you just direct it up and you can see the name of all the stars and constellations, rather planets. There's so many planets that are visible. Saturn, Pluto, उसमें सब दिखता है. And it is so clear. So उसी से पता लगता है that that's Venus. Otherwise, I would never have known. So, but then, yes, it's beautiful. The moon yesterday was beautiful. It's still there. Today is as powerful because the moon continues. The full moon continues. Yes, so we continue with our day number 0. So Reena is reading the first book and Vijayji is reading the second one. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yeah. So yes, so yesterday we had begun studying about that is life truly magical? Life is magical. बचपन में बहुत हम जादू में believe करते थे, लेकिन अभी दोबारा से believe करने लग रहे हैं because बहुत जादू होते हुए नजर आएंगे हमको life में. जितना हम inwardly connected होंगे उतने ही हमको outwardly जादू नजर आएंगे. And being connected to the nature, like celebrating the full moon, celebrating the sunrise, celebrating the sunset, admiring the sun in the sky, when the wind blows, feeling the feel of, you know, the wind on our face, on our hair, you know, that little flower which is differently colored, you know, purple and pink and magenta and violet and yellow, you know, like admiring the colors. That is the real connecting to self, because Bhagwan to 5 elements mein hi hai aur nature mein hai, because nature is, you know, like so created by this universe. So the moment we admire and we celebrate these little things like the constellations and the starlit night and stargazing. So every time now when we go for a vacation, hum ek stargazing night trek pe nikalte hain, you know, which is so beautiful, especially agar clouds nahi hote hain to bahut sundar, but then clouds hote hain to clouds ke colors and hues ko admire karna, that itself is again celebrating nature. And more you celebrate nature, life will be full of magics and miracles and you will see some wonderful things happening zindagi mein. So yahi हमने जो कल वाले इसमें पढ़ा था, that बचपन से अभी तक हम लोग इतना ज्यादा नेचर से में भी मैजिक्स होते थे, तब सोचते थे, उसके बाद लॉजिकल माइंड थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया हमारा, और फिर हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो माइंड है, जिसको क्रिएटिव माइंड बोलते हैं, द माइंड ऑफ क्रिएशन. सो ब्रेन और माइंड में डिफरेंस ये होता है, ब्रेन इज मैटर ऑफ कोर्स, द सेल्स, द न्यूरॉन्स, एंड माइंड इज ब्रेन इनटू एक्शन. तो उसको हम माइंड बोलते हैं. तो हमारा माइंड बहुत चलता है ना, बिकॉज ब्रेन इज ऑलवेज इनटू एक्शन, and but then sometimes gravitating towards the negative side and the past, but then, you know, to use that right side or the prefrontal cortex of the brain, उससे हम अपनी नई आने वाली जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं. तो वो सीखने के लिए हमको थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को साइडलाइन करना पड़ता है, बिकॉज मैजिक्स और लॉजिक्स ये दोनों ऑपोजिट एंड ऑफ द कॉन्टिन्यूअम है, लाइक ऑपोजिट एंड ऑफ द स्टिक होते हैं. So yes, we continue reading as to how to instill magic into our lives. So that is what. Yes, Reena, we'll start from here. I'm here to tell you. Yeah, I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusion adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you even
thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that is the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. Yeah, so this is a very thrilling part. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है हमेशा पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं ये वाला. That magic of life is actually real. अभी तक हमको पता नहीं था कि ऐसे जादू हो जाते हैं. यूनिवर्स कितना strongly into action रहता है पूरे टाइम. You know, we don't know because वो हमारी frequency actually frequency से match. Universe talks to us only through frequency. Universe की language वो होती है. सो जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी एलिवेट होती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू बी इन ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वैसे भी ठीक है. सो उसके हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है अब वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी इज हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, excellent health, joy, amazing travels, you know, everything that gives a smile on our face and makes us very, very happy. So इसीलिए अपनी frequency elevate करना जरूरी है. And it is like अगर एक चीज में भी करते हैं ना, सपोज सिर्फ रिलेशनशिप में आप थैंक यू बोल रहे हो, सपोज थैंक यू फॉर ऑल माई रिलेशनशिप्स, थैंक यू फॉर ऑल माई रिलेशनशिप्स, थैंक यू फॉर ऑल माई रिलेशनशिप्स, जस्ट दैट, ठीक है. तो वो हो सकता है कि आपकी सक्सेस प्रोस्पेरिटी में कोई मीनिंग ना रखे, ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन यू कॉन्स्टेंटली राइटिंग थैंक यू फॉर ऑल माई रिलेशनशिप, बट फ्रीक्वेंसी तो उसकी वजह से हाई हो रही है ना. सो वो फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो सारी वो चीजें दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा. फ्रीक्वेंसी हाई होगी रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड उसके लिए कर रहे हो, तो पैसा भी आएगा, प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा आएगी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, जॉब में प्रमोशन होगा, बिजनेस में क्लाइंट आ जाएगा, यू नो, ऐसे ऐसे अमेजिंग लोग मिलने लग जाएंगे, बहुत सुंदर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आएंगी. it is like you start seeing the life very differently. So it is not that एक चीज के लिए करो तो दूसरी चीज नहीं आएगी. It doesn't work like that. Okay, frequency high होते ही सारी चीजें जो universe has to offer to us, that starts pouring into our life. I think raining is the word. That starts raining into our life, you know, and this is how beautiful the life is. Can we please control the screens and the mute buttons? Ma'am, Okay. can you please make me the co-host? Yeah, I'll also remove this drawing line that is there. Yeah, so you're the host, co-host, and also I'll just annotate. No, ये भी नहीं है. कहाँ से erase कहाँ से होता है? मैम annotations एनोटेशन से होता है ना. हाँ, एनोटेशन ये एक्चुअली वो जूम अपडेट हो गया है, तो इसलिए एनोटेशन में सिर्फ एक चीज आ रही है, टूल बार अपग्रेडेड, चेक आउट द ब्रांड न्यू टूल बार. तो उस टूल बार में होगा मैम. हाँ वही तो, वो ब्रांड न्यू टूल बार वो खुल ही नहीं रही है. आई थिंक उसको उधर जाके, ठीक है चलो, डजंट मैटर.
We are going to leave this behind. Yeah. So Let it is go. like a flash of meteor coming on the screen. Yes. Okay. So this is how it is like. So this is how our life has to be. तो ये 3 catch phrases हैं इसमें. इसको पकड़ के रख लेते हैं हम. That life is breathtaking. Okay, wondrous. First is wondrous. This is the adjective for our lives. Breathtaking, awe-inspiring, and exciting. Okay, so ये हमारा आज का टेक अवे फ्रेज है जो हमको लाइक एन एफर्मेशन लिखना चाहिए. And for a while I've been writing, okay, बीच में थोड़ा सा उड़ गया था because then I write life is easy, effortless and beautiful and life is celebration. But yes, I mean, this is such a wonderful catchphrase that thank you universe, that my life is so wondrous, breathtaking, awe-inspiring and exciting. Okay, this is the kind of life we want. तो इसमें सब कुछ ही आ जाता है ना. अगर बीमार होंगे तो ऐसी लाइफ थोड़ी हो सकती है ब्रेड टेकिंग एंड एक्साइटिंग. पैसा नहीं होगा तो नहीं हो सकती है. रिलेशनशिप अच्छी होंगी तभी ऐसी हो सकती है, राइट? सो this has to be the life by being in gratitude all the time. So that is what it is like. So it says that हाँ, अब हमको वो रेनडियर, सैंटा क्लॉज वो सब नहीं दिखेगा anymore because हमको ये पता लग गया है कि वो सब अनरियल था. बट हमको अपनी सारी ड्रीम्स वाली जो चीजें हैं जो हमने सोची थी, you know, I'm sure all of you all must have done the scripting yesterday. Continue doing that today also. It's good that weekend hai. So all the things that you have ever dreamt of for so long suddenly happening, and you will never know exactly how everything weave together because the moment आपने desire या वो rocket of desire shoot किया, वैसे ही assembling शुरू हो जाती है universe में. You know, जैसे अगर आपने ये सोचा है that you want to have a very high position in some organization, or you want a promotion in your company, or you want a lot of money. अब promotion के लिए उस seat पे कोई और बैठा हुआ है अभी, है ना? तो अब वो जो person है अभी उस seat पे है, universe will start orchestrating कि उसको कहीं और से offer आएगी, which is way better. ठीक है, उसको बहुत पैसे मिलेंगे, वो सीट खाली होगी, someone else will propose your name and then you come into seat, but all this might just take 2 months. Okay, तो उस 2 महीने भी हमको बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहने की जरूरत है. तो जैसे ही रॉकेट ऑफ डिजायर शूट किया, कोई भी डिजायर आपके मन में है, अगर आपने वो यूनिवर्स से बताया, बात की, लिखा, ग्रैटिट्यूड किया उस चीज के लिए, वैसे ही the universe starts assembling the things for us. Okay, and everything is sorted and very soon you will see it appear. Depending on your frequency, the time duration will be decided. Okay, अगर आप लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी रखते हो तो वो चीज बहुत जल्दी आ जाएगी. अगर फ्रीक्वेंसी बीच में डिप हो रही है तो वो चीज और दूर चली जाएगी, मतलब बाद में आएगी. इसीलिए हम बोलते हैं कि always try to keep yourself in the best of the spirits. So this is how it is like, और ये इसी को हम magic बोलते हैं. And magic always works in the invisible realm. You know, कहाँ से कैसे आता है हमको पता नहीं लगता. So yes, we are ready for the magic again and we will see कि हमारे पुराने sacred texts थे उनमें क्या लिखा हुआ है. हाँ जी. रीना. Oh, I'm sorry, I got unmuted. A great mystery is revealed. तो ये मिस्ट्री रिवील है, हम पढ़ते हैं, ये सेक्रेट टेक्स्ट है, यहाँ पे सब में क्या लिखा हुआ है, क्या मिस्ट्री थी. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer.
But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it is a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, and that is gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, our cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yeah, so it is nothing, it is not just, like spiritual or something. Everything is scientific. जो जितना भी मतलब, क्योंकि ये सब एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बातें तभी लिखी हुई थी हमारे उपनिषद में, हमारे सन और मून के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है, अर्थ और सन का डिस्टेंस लिखा हुआ है, सारे 9 प्लैनेट से सन का डिस्टेंस लिखा हुआ है. उस वक्त तो साइंस नहीं होती थी, कैसे पता लगता था लोगों को, है ना? So everything is very, very practical, even, like back then. So it says, this is gospel, the Matthew. So हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, oh, this is the gospel truth. मतलब colloquially भी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर हमें कुछ भी prove करना होता है, no, I'm speaking the gospel truth, or this is the gospel truth. हम ऐसे ही बोलते हैं ना. So gospel, the Matthew ने ये वाला लिखा हुआ है, sentence, phrase, whoever has will be given more, but इसमें एक missing word है, वो gratitude है. Whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have dash, even what he has will be taken from him. That means जिनके पास gratitude है, जिस भी चीज के लिए gratitude है, उसकी abundance हमें जिंदगी में मिलेगी. And अगर हम ungrateful हैं, अगर complaining attitude है, then जो हमारे पास है, वो भी हमसे ले लिया जाएगा. और ये बहुत साइंटिफिक सेंटेंस है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन. आई कीप टेलिंग दैट. सो इसमें बस रिडल यही है, ये हिडन वर्ड था, ग्रैटिट्यूड. whoever has gratitude will be given more and he and she will have an abundance, and whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. और इसीलिए इसमें ये चीज 2000 साल पहले ये लिखा हुआ था. और ये अगेन दूसरा कैच फ्रेज है हमारा, if you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. तो क्या हमने बचपन से, जब तक ये बुक्स हमारी लाइफ में नहीं आई थी, तब तक क्या हमने थैंक यू को या ग्रैटिट्यूड को टाइम दिया? नहीं दिया ना. हाँ, ऐसे बोलते थे, अगर किसी ने हमको पानी ला के दिया, सो वी माइट जस्ट से थैंक यू. अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी ने हमको खाना सर्व किया, तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे. बट हमने टाइम का निकाला थैंक यू के लिए? वो तो ऐसे ही एक माइक्रो सेकेंड में हमने थैंक यू बोल दिया था. Taking out time for gratitude, that we did yesterday, we do every morning, we do it sometimes. So more time you will give to gratitude, more abundance you will receive, and more quickly you will be able to transform the situation.
So ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So if you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. Okay? So इसलिए जितना ज्यादा फालतू की चीजों को नहीं सोच के, जैसे कुछ हो रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है घर में, कुछ something's going on in the head. So just stop everything. Just write thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. बस. ठीक है? उस चीज से ही एनर्जी चेंज हो जाएगी. अपने आप को वो कल डाला था, रीना आपने डाला था ना फीलिंग चार्ट Yes, दोबारा ma'am. से, हाँ दोबारा से डाला था. तो उसमें आप देखना कि एक बीच में डिवाइडिंग लाइन है, अपने आप को उसके ऊपर रखो और ग्रैटिट्यूड में रखो. ग्रैटिट्यूड इज सेकंड लास्ट. ओके, उसके ऊपर लव है. लव इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट. दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव दैट गॉडली पावर्स ना, जब लव आ जाता है. सो ग्रैटिट्यूड एंड लव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है, और वो जब हमारी लाइफ से रेडिएट होगी तो वैसे ही वो जो सिचुएशन है जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो, वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी अभी बदल गई है. सो इसलिए try and give more time to gratitude, which of course we did a lot yesterday. I came back so late from work yesterday and a long drive. मुझे ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं कौन से स्टेट से आ रही हूँ. Of course, it was from the state of Haryana to Delhi, Gurgaon to Delhi, but long drive. And then, constantly there was something calling inside me, 369, 369, 369. पता नहीं क्यों. एंड फिर मैं आई, फिर मैंने सबसे पहले 1 से लेके 369 तक नंबर लिखे, 1 2 3 4 एक एक लाइन में. एंड देन आई रोट 369 ब्लेसिंग्स. 1 लाइनर्स ही थी, एक एक लाइन में एक लिखा हुआ था. wrote that. Then I did my scripting of good 3 to 4 pages as to what I have to see my life going forward right now, मतलब immediate goals, ऐसे script paragraph के form में. And then I did my meditation for just about 5 minutes because बहुत late हो गया था, नींद आ रही थी, and it was a long day yesterday. And then finally I slept. So that, so giving time to gratitude is something, and I know that my life forward is going to be beautiful, and all the things जो मैंने अपनी scripting में लिखी वो हो जाएगी, because foundation क्या थी जिसके ऊपर building बन रही है. अगर foundation ही gratitude से बनी हुई है, gratitude के tool से बनी हुई है, अपने आप जो उसके ऊपर floors add हो रही हैं, जो हमने last chapter में पढ़ा था, they will look very beautiful, और उनमें substance होगा, है ना? And there'll be quality, there'll be substance, and there'll be a lot of meaning. And of course, it will lead to a life which is wondrous, exciting, awe-inspiring, and so beautiful. Okay, so this is how. So giving time to gratitude, whereas I could have just come and, watch some television or maybe a cricket match or something. But why to waste that auspicious day of the full moon? क्यों शरद पूर्णिमा का दिन हम, और आज तो eclipse भी नहीं होगा. आज पूरा दिन मून है, शाम को भी फुल मून से बहुत थोड़ा सा कम होता है बस, बट पावर्स आज भी उतनी रहेंगी. व्हेन आई वाज इन गोवा रिसेंटली, सो आई वाज देयर एट द फुल मून ओनली, एंड उसकी जो like जो sea waves की जो high tides था, so of course on the full moon they were very very high, and the normal beach that we normally see was not visible because the water was coming till the building, till the beach club. So I was at a beach club. So the water where we normally, I go for a run in the morning on that beach. So उस पे पूरा मतलब बहुत अंदर तक पानी sand होता है, बहुत मतलब you can say almost like 100 meters area होता है जो beach club से लेके वो sand area होता है जो beach होता है, and then the water starts on the sea. And on the full moon day, the tides were so magnetic, मतलब वो ऊपर है ना, moon pulls it towards itself. So क्योंकि magnetic moon होता है, so the tides were coming till the beach club building, so you couldn't walk there. And next day was also equally powerful. So this is what I'm trying to say, that even today the day is very powerful. So अगर आप कल नहीं कर पाए because of some social engagement or something, you've not done as much, today we have another chance. So it's magnetic. So why not, like give our dreams and desires to the moon to fulfill? They will, I mean, like we will magnetize them to ourselves. So that's how it is. And like giving time to it is what I wanted to read that for you. Quran में भी ये लिखा हुआ है. Quran में लिखा हुआ है, if you're grateful, I will give you more. God proclaimed this. Okay, the forces of the universe, that is, God is the forces of the universe, 5 elements and all the 9 planets, sun and moon.
So it says, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. So punishment तो हमने झेल लिए बहुत सारे, अब और नहीं, है ना, अब वो सब नहीं करेंगे. तो इस तरह से सारे होली स्क्रिप्चर्स में यही लिखा हुआ है, और ये सब साइंटिफिक स्टडी है. दिस इज डेफिनेटली नॉट जस्ट स्पिरिचुअल और कोई कहीं सुनी बातें और वो सारी चीजें. दे आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल साइंस. देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर इट. हाँ जी, it's universal law. It's a universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I cannot pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance your magnetize, the more abundance you magnetize. It's universal law. You will have heard saying like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. So I had mentioned earlier also, मुझे इससे वो Color Purple movie याद आती है. Oprah Winfrey has done only one movie जिसमें उन्होंने खुद, she was the protagonist, she was the actress in that movie, Color Purple. और उसमें जो dialogue था कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं तो एक carriage में that person, you know, who's sitting in that carriage, she goes up and she turns around and she tells him that whatever you've done unto me has already been done unto you.
has already been done unto you. So in the invisible realm, अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है या सोचा है, वो already उसके लिए हो चुका होता है, वो हमारे लिए हो चुका होता है. अगर हमने कोई भी thought, word, action, feeling किसी और के लिए hold करी है, वो मल्टीप्लाई होके हमारी जिंदगी में वापस आ जाती है. जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसमें लिखा है मिनिमम 3 टाइम्स होके वो वापस हमारे पास आती है. सो एनी एनर्जी, एनी वर्ड, एनी थॉट, एनी फीलिंग दैट वी हैव गिवन टू समवन एल्स, okay, that we have directed towards someone else, minimum it would multiply 3 times and come back to our life. So अगर हमने किसी को bless किया है, तभी मैं बोलती हूँ that when you're walking on the road, bless things, bless the birds, bless the cats and dogs that you see on the streets, bless the trees, bless the pebbles and stones, the road, the highways, the flyovers, the beautiful buildings, not so beautiful building, people around, the traffic, the colonies where you live, the squirrels, or whatever that you see around. Constantly अगर bless करेंगे, लोगों को बहुत bless करो, because सबसे high power energy होती है उसमें लोगों के पास, human beings, उनको bless करो. And more you bless, you will see that all that will start coming back to your life, and your life will be saturated with such a high frequency that आपके सारे बिगड़ने वाले काम भी बनने लग जाएंगे. जो चीज आपने नहीं मांगी थी वो बोनस के फॉर्म में हमको मिलती जाएगी. Things that we may have wanted, but we never prayed about it because हो सकता है हमको matter नहीं करती. Even those things will start coming back to your life. And this is how beautiful the life is. It has so much to offer. हमको जीने का तरीका ही नहीं पता था. तो इसमें शुरू में यूनिवर्सल लॉ के बारे में लिखा हुआ है, that law of attraction. So everything, सारे atoms और molecules held together हैं, तभी तो एक human body बनी है. 100 ट्रिलियन सेल कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं हमारी बॉडी में, क्लस्टर्ड अप है ना, तभी तो हमारा एक ह्यूमन फॉर्म आया है, एक सॉलिड फॉर्म. सो कोई भी चीज जो सॉलिड फॉर्म है, दैट हैज ऑलवेज कम बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज देयर इज ऑलवेज दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग इन अ लाइफ. एंड द सेम थिंग, एंड इसमें भी यही लिखा हुआ है जो हमने बाकी की बुक्स में पढ़ा हुआ है, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड. तो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को चूज करना सीखना चाहिए हमें, जो एक स्ट्रगल होता है कई बार, बिकॉज इट टेक्स टाइम कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो. कई बार ऐसे बेड में लेटे हुए होते हैं, माइंड वेवर्स एंड इट गोज इनटू नेगेटिव डायरेक्शंस एंड स्टफ, तो वो सारा अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होती है, बिकॉज माइंड इज ब्रेन इनटू एक्शन. Okay, so this is how it is. यहाँ पे बहुत beautiful examples भी दिए हुए हैं. So yeah, it says here, in your life, this law, that is the law of attraction, operates through your thoughts and feelings because they are energy too. So whatever you think, whatever you feel, you will attract to you. तो इसमें example दिया हुआ है. Suppose अगर I don't like my job, अगर आपने सोचा मेरा इतना distance है, I don't like my job, my salary is not enough, my boss is grumpy, my colleagues are so bad, like मेट्रो में बहुत रश होता है, ट्रैफिक उस टाइम बहुत होता है, तो वो सारी जो चीजें हैं, तो फिर यूनिवर्स विल कीप टेलिंग यू, ओके, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैव मोर ऑफ व्हाट एवर यू आर सेइंग, सो हैव मोर. Okay, so never say things like, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ वायरल फीवर होने वाला है, ये सब. He or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, मेरा बच्चा प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं करता है, my life is a mess, my marriage is in trouble. So अगर हमने ये सब बोला तो हम ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. या हमने बोला बार बार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तभी हम बोलते हैं कि जैसे ही यू आर एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग नेगेटिव, सपोज आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, क्वारल हुई है, व्हाटएवर इट इज, thank you for my perfect relationship. This has to be the sentence that you have to come, that has to come to your mind or out loud. Okay, so this has to be that, thank you for my perfect relationship, although we are faking it, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, we've just had a quarrel with someone. Okay, but मन में हमारे क्या चल रहा है, thank you for my perfect relationship, thank you for my perfect relationship, thank you for my perfect relationship. Like a parrot, you keep ranting it and parroting it in your mind. And this is the only way forward. Otherwise, you do anything and you see. We've already done everything and seen. मतलब अब क्या ही बोले. तो इसलिए अगर आपका कोई भी हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, so you have to keep telling to yourself,
Thank you for my perfect health. 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 This is what you have to keep telling, okay? Because every cell of the body is listening. Body is so much water. Water is 100% energy and it absorbs everything that comes to our mind. और इतनी strong electromagnetic conduction हमारी body में होती है. We have something called nervous system. हम सबको पता है brain है और brain के सारे जो nerves है, origin brain है, वहां से spinal cord में सारी nerves आती हैं, ठीक है? वहां से साइंटिफिकली हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं, बट वहां से नर्व्स पूरे मैट्रिक्स की तरह पूरी बॉडी में फैली रहती हैं. और कंडक्शन जो ब्रेन वेव्स में होता है, जो ब्रेन वेव्स बोलते हैं ना हमेशा, बिकॉज दे एक्चुअली गेट वेव्ड डाउन टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल. हर सेल से ब्रेन वेव आती है. जो दिमाग में चला है वो आपके सेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन से रेडिएट हो जाता है और सेलुलर स्ट्रक्चर उसी वक्त चेंज होना शुरू हो जाता है. So this is how beautiful the human body is. इसीलिए हम सोर्स को ही कंट्रोल कर लेते हैं जहां से आ रहा है. That means thoughts and feelings, because सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन तो वहीं से हो रहा था ना. तो कितनी भी बुरी सिचुएशन है, कुछ भी है, my future is beautiful, ये बोलते रहना है. Okay, only then the beauty of the future will unfold before our eyes. Otherwise, how will it? If we keep thinking about that life is so burdensome and this and that, it might be burdensome right now, but it's just a phase. Okay, it is just a phase. That phase can be 10 days, it can be 2 days, it can be 1 month, depending upon हम क्या frequency में रहते हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी frequency को नीचे मत आने दो, चाहे fake करना पड़े. कहते हैं ना, fake it till you make it. Fake it. If it is good for us, we need to fake it. Okay? And fake it till you make it, इसीलिए तो बोला जाता है. Why is it even a phrase? Why are people even talking about this phrase? Because that works. Okay? And we have to ensure that whatever works in our life. So this is how it is. So instead, we have to keep saying, I love my job. My family is very supportive. चाहे वो नहीं supportive है अभी, does not matter. Okay? I had the best vacation. अब vacation हुआ भी नहीं है, लेकिन हमने पहले ही affirm कर दिया that I had the best vacation. I feel amazing today. I got the biggest tax refund ever. मैंने आपको बताया था ना, ये वाला sentence मेरे subconscious mind में इतना ज़्यादा वो हो गया है that this year I got my biggest tax refund on 6th of September. A huge amount got credited into my account, quite a few lakhs. Okay? Because ये वाला sentence पढ़ के, तो अगर ये सेंटेंस भी टैटू हो जाए ना अगर हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, आई लव माई जॉब, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, आई फील अमेजिंग एवरी डे, you know, I got the biggest tax refund ever, I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel gratitude, the law of attraction will bring more of these things into our life, because gratitude is magnetic. है ना, बहुत पावरफुल, चुंबक की तरह होता है ग्रैटिट्यूड. जिस चीज के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया वो फट से एनर्जी वापस आपकी जिंदगी में आती है. And that is how beautiful it is. And the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's universal law. So जैसे कहते हैं ना, whatever goes around comes around. जो आप बीज बोते हो, पेड़ उसी का उगता है. और ये सारी चीजें तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, वो सारी चीजें. तो वो बेसिकली क्वांटम लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, एनर्जी लेवल पे इसी तरह काम करती है कि जो आप सीड डालोगे, जो भी सीड आप डालोगे, अगर आपने सीड ग्रैटिट्यूड का डाला है तो उसी का बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा. ऑन एन एवरेज एक पेड़ पे 500 एप्पल्स निकलते हैं. तो अगर एप्पल का बीज आपने डाला है तो 500 एप्पल आप उसको रीप करोगे, उसके उतने बड़े हार्वेस्ट को. तो सोचो आप, अगर आपने ग्रैटिट्यूड का बीज डाला है दैट वट एवर इट इज, दैट माई हेल्थ इज सो अमेजिंग, तो अब उसके 500 का फल निकलेगा. उसका पेड़ जब बड़ा होगा, और वो बहुत जल्दी बड़ा होता है, वो आम के पेड़ की तरह और एप्पल के पेड़ की तरह टाइम नहीं लगाता. एनर्जी फील्ड में टाइम ऑन स्पेस बिल्कुल क्रैश्ड होता है. जैसे ही आपने वो एनर्जी दी, वो घूम के इमिडिएटली वापस आती है. ठीक है, इट डज नॉट टेक टाइम. इसीलिए ब्लेस करते रहो, अच्छी बातें करते रहो, अच्छी बातें बोलते रहो, जो फ्यूचर में देखना है उनके बारे में सोचते रहो. ठीक है, एंड जस्ट वेट फॉर द अनफोल्डिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ एंड देन शेयर इट विद अस. जैसे सर आइजैक न्यूटन ने बोला था,
that every action has an equal and opposite. This is Newton's third law of motion, इसको बोला जाता है. The Newton's third law of motion थी ये, स्कूल में जब पढ़ा था हमने. Every action has an equal and opposite reaction. जो एनर्जी आप दोगे वो घूम के वापस आपके पास आएगी, opposite reaction. Okay, so and whatever you receive will always be equal to the amount of gratitude. ये बहुत बहुत जरूरी सेंटेंस है. कितना अमाउंट आपने सैचुरेट किया है, उस अमाउंट से आपकी विक्ट्रीज होंगी. थोड़ा सा दिया है ना तो थोड़ी सी विक्ट्री होगी. अगर बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दिया है तो बहुत सारी विक्ट्री होगी. दैट्स हाउ इट इज. सो गिव मोर टाइम टू इट, थिंक मोर अबाउट इट, राइट मोर अबाउट इट, टॉक मोर अबाउट इट. कल जब मैंने 369 लिखे थे, 369 ब्लेसिंग्स, तो मैंने सारे all 369 I was speaking out loud. All of them I did out loud. 369 was out loud. Scripting of course मन में करी थी, लिख के करी थी, लिख के मन में सोच के लिख के. But 369 मैंने सारे out loud किए थे, all of them. You know, that is how it was. So जितना बोलेंगे, जितना सोचेंगे, जितना करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतनी ज्यादा अमाउंट, उसी अमाउंट में विक्ट्रीज आती है. तो हम बहुत सारा लिखेंगे, तभी तो हम ये बुक बार बार पढ़ रहे हैं, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए. सो आज हम इतना ही कर पाएंगे. थैंक यू सो मच रीना फॉर रीडिंग. योर वॉइस इज सो लाउड एंड क्लियर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. हमने लिखा था कि वी लव लिसनिंग टू यू. और ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा था. मैं सच में अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझ रही हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू रीड दिस चैप्टर. Yeah, thank you so much. Thank you and wish you the best of life. और जल्दी से आपके बेटे की शादी हो जाए. आप ढूंढ रहे हो लड़की. What a great wish on this auspicious day. Thank you, ma'am. Auspicious day, yes. So the golden thread of gratitude हम कल करेंगे. इसमें हम देखेंगे कि कैसे मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट आए थे, उनके भी 5000 2000 साल पहले से जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे, उस दिन से आज की तारीख तक एक गोल्डन थ्रेड चला आ रहा है ग्रैटिट्यूड का. तो इसमें रोंडा बर्न की रिसर्च टीम ने इतनी बढ़िया फेनोमिनल रिसर्च करी है. तब से लेके आज तक उन्होंने सारे वो स्क्रिप्चर्स हटाए. सो विल बी वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस टुमारो. एंड नाउ वी गो टू द अदर बुक व्हिच इज हीरो. ओके, जब हम ये पढ़ लेंगे तो मैं आपको कल मेरे पास 3 क्वेश्चंस आए थे किसी के. ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं बताऊंगी कि किसके क्वेश्चंस थे, बट उनके आंसर आई थिंक जो मैंने उनको दे दिए थे, तीनों को दे दिए थे. लेकिन आई विल टेल यू, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये हो सकता है आपका भी क्वेश्चन हो जो आप पूछा नहीं है आपने, या ऐसा कुछ. सो हम उसका आंसर बता देंगे. ठीक है. सो यस विजय जी. Yes, thank you. बहुत टाइम बाद आप you're reading, right? I mean, like it's been. Yeah. We were shifting, in the process of shifting, that's why. Oh, Kacha, you shifted again? Shifted to Lotus. It was under Lotus Panas. Oh, okay. It was under interior decoration and Oh, yeah. amazing. Acha, Manju didn't tell me anything like that you all were shifting. Yeah. Okay, yeah, please start reading. विजय जी, आपने Yeah. मुझे भी नहीं बताया आप हमारी सोसाइटी में आ गए. इनके घर The process is still going on. Yes. Yeah. So विजय जी मुझे तो लग रहा है सुबह आप वहीं रन पे हो, करते मुझे हैं. ऐसा विजय फील हो जी रहा है. मेरी तरह विजय जी मेरी तरह सुबह रन करते हैं, तो हम कभी कभी साथ रन कर लेते थे. तो अब आपकी भी फिटनेस रेजीम वो हो जाएगा. Yes. डबल हो जाएगी. हाँ, ठीक है. डन. Yes. Lane Beachley. If you are doing anything in life that's not making your heart sing, that's not fueling your passion to get up on a daily basis, then you are not fulfilling your role as a human being on this planet. हाँ, देखो भाई कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है. अगर आप रोज सुबह उठ के, अगर आपका दिल गाना नहीं गा रहा है, इफ योर हार्ट इज नॉट सिंगिंग, यू आर नॉट फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसलिए रोज सुबह जब हम उठें, सो के उठें,
तो हमारा हार्ट सिंक करना चाहिए, हमको वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, वाओ यू नो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, आई लव माय डे फॉरवर्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट माय डे, यू नो, एंड यू फॉलो ऑल द पैशंस, जो जो आपको पसंद है वो आप करो. So then it will be called as that you're fulfilling your role as a human being on this planet. Very powerful thing to say. Hanji. Michael Acton Smith. Life is short. It's not a dress rehearsal. It's about grabbing it by the stuff of the neck and experiencing as many things and meeting as many people as possible. It's not definitely about sitting on the sofa and watching TV and moaning about what might have been. इनको पता है इन सबको कि हम क्या क्या करते हैं, तो वो सारी वो चीजें लिखी है. लाइफ इज नॉट अबाउट सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स टुगेदर, ओके, एंड सेइंग दैट मेरी लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो रही है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट सेज लाइफ को ऐसे सोचो. सो हमारे मेंटर डॉक्टर दाइसा को इकेदा बोलते हैं दैट लिव टुडे एज इफ इट्स द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ. मतलब आज का दिन ऐसे जियो जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है. सब कुछ वो करने की कोशिश करो जो आपको लगता है जो आज में डाल सकते हो, यू नो, दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, यू नो, लाइक उस तरीके से दैट एवरी डे हैज टू बी सो एक्साइटिंग. सो इट सेज लाइफ इज नॉट अ ड्रेस रिहर्सल कि बस पहनो, फाइनल कपड़े पहनो और परफॉर्म करो. ड्रेस रिहर्सल जिंदगी भर थोड़ी करते रहेंगे, बहुत हो गया, वो कर लिया हमने जितना करना था ड्रेस रिहर्सल. सो इट्स लाइक इट्स अबाउट ग्रैबिंग इट बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड experiencing. So this is one sentence I always keep telling to myself and to all my very close friends, you know, जिनसे मेरी रोज interaction होती है, that life is only about, you know, making moments and memories. So everything in life, you know, make a memory out of it, make a moment. मतलब वो इतना amazing moment हो, इतनी amazing memory हमेशा के लिए बने. फिर हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे या we'll think about the past, or then it will only bring us joy and a love in our heart and a smile on our face, isn't it? So life is only about making moments and memories. In fact, जो हमारा struggle वाला period होता है ना, वो हमारी सबसे beautiful memory बन जाता है, because वो हमको help करता है to stay grounded. ऐसे आज I was just, you know, writing to someone that, you know, I ऐसे ही कुछ किसी ने मुझे हाय हेलो किया था बहुत टाइम के बाद, तो मैंने उनको लिखा हुआ था, no, I really wish you a huge success, a phenomenal success in your life, but you know, one advice, that always be grounded, because as you soar higher and higher in your life, you know, go more towards the ground. So I said that that's my only advice for you. So this is how it is, like, you know, we definitely are going to get higher and higher, but while at the same time make moments and memories. It should not be that, you know, मतलब आप वहां पहुंच के इतने वो हो गए हो that आप अपनी ground realities को भूल जाते हो. So इसलिए ये जो phases होता है ना, which are not that great right now, like that wherein we need to struggle so much, because there are moments sometimes and there are those phases and periods of life जहाँ पे हमारा थोड़ा सा struggle होता है, लेकिन वो वाले जो phases होते हैं वो हमको बहुत पैर हमारी धरती पे करके रखते हैं. तो हम बहुत stupendous success, phenomenal success हम सब की लाइफ में आएगा, because हम gratitude को एक अलग लेवल से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, टाइम ज्यादा दे रहे हैं ग्रेटिट्यूड को, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं. अब हमको फ्लावर्स, बर्ड्स, ड्यू ड्रॉप्स, द कलर ऑफ द लीव्स, यू नो, ये सारी अलग तरीके से दिखती है, पहले नहीं दिखती थी. हमेशा वी आर सराउंडेड बाय पार्क्स. इन इंडिया वी हैव सो मेनी पार्क्स, यू नो, मतलब हर कॉलोनी के साथ में, कॉलोनीज के अंदर वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं, पार्क्स होते हैं. सो आई ऑल्सो व्हेन आई एक्सपीरियंस कि मेरे ऑफिस के पीछे वाला पार्क है, जो हमेशा मैं बताती हूँ ना, उसमें 400-500 पेड़ है, 400 to 500 trees. Every tree has a different green color. One will have one shade here. I never knew that green can have so many shades. All this we notice only when we are connected to the universe. Okay, the trees were always there. My office was always there. Okay, but the vision has changed, right? So when we become these kind of people, even these little, you know, जो हमारे challenges आते हैं life में, they become beautiful memories. And then you actually look back and see that आप वो आपका वो होता है ना, वो एक milestone था और आप next milestone पे पहुंचे हो जो बहुत आगे जाके, maybe 100 miles ahead. ठीक है, तो उस माइलस्टोन को देख के कम से कम आप देख तो पाते हो, दैट इज वेयर आई वाज एंड दिस इज वेयर आई एम.
That's like really amazing. Like every birthday I say to everyone na, that's view your life, that एक साल पहले जो आपका बर्थडे था उससे जो आज आपका बर्थडे आया है, कितना, what journey have you scaled, how have you grown as a person, you know, what different things have you done, what kind of actions and growth in terms of materialism or in terms of the spiritual growth जो हमारी जिंदगी में आई है. That is so much. So that is what. So इसमें है that, you know, just make moments and memories in your life, meet new beautiful people, learn from everyone. And it's definitely not about sitting on the sofa and watching TV. So we are seeing a lot of World Cup these days. So maybe we can condense the time that we give to it and or organize ourselves into doing it. Because देखो वो तो cricket players हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो खेल के चले जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप enjoy कर रहे हो, कभी कभी बहुत exciting match होते हैं. Every Sunday matches where India plays. Of course, you can give that time. Okay, but then organize the life so much that, you know, you should not feel that ye nahi kiya to ye kya. Live today as if it is the last day of your life. Then we are going to savor the real joy of life. So it's just that, you know, अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना हमारे हाथ में है. While at the same time कभी कभी time whiling away में भी मजा आता है, that you're just lying on a couch and you're reading or watching some nice movie. That's also adding meaning to life. So it's not that बहुत ही ज़्यादा saintly life lead करनी है. अपनी जिंदगी के सारे मजे करो, हंसो, गाओ, खेलो, कूदो, डांस करो. I mean like अच्छा खाना खाओ, जो पसंद है, पिज्जा विज्जा भी खा लो, वो सब भी ठीक है. But yeah, balance is the key. हाँ जी. Yes, Liz Murray. We buried my mother the day after Christmas. I was 16-year-old. We had no money for a real funeral. So she was in a pine box with the lid nailed on. They wrote the word head and feet on this box. It was the most awful thing. We had a troubled life, but we had a very loving relationship. And my mother used to sit at the foot of my bed and share her dreams with me about being sober, about getting a house, about having a better life. And at the end of all of her talks was that she was going to get around to doing it, but not right now. She would do it later, and she would do it later. And I realized at some point that I was living my life telling myself I would do it things later. You might think I've got time to follow my dreams. You don't have time. Life is short. The current life expectancy is 24,869 days, while some of us will live more days and some fewer. Either way, you have only a precious number of days to live this life, and so do not have time to put off your dreams. It is now or never. If you don't do it now, you will keep putting it off and you will never do it. The time is now. Yeah, this is such a reckoning for us, no? That the Yes. time is now. You don't have tomorrow. हम बोलते ही है, मतलब procrastination तो वैसे भी करनी नहीं चाहिए कि आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे. This is the time and this is the moment. When people say, there's so many people in my life, in my office, हम बस ये आज हमारी last smoking है, कल से हम सिगरेट छोड़ देंगे. बस आज लास्ट है. मैंने कहा क्योंकि आज से अभी से क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगर अभी से नहीं कर पाए तो फिर कल भी नहीं करोगे, क्योंकि वो कल अभी हो जाएगा. मतलब tomorrow will become now, you know, so the time is only now. So it's very important that we realize this. So Liz Murray ने अपनी मदर के, उनकी मदर बहुत heavily drugs and alcoholism में थी because of too many problems in life. और so that's what she says, that मेरी mother की जब death हो गई थी तो Christmas के एक दिन पहले, एक दिन बाद, और उनके कॉफिन भी नहीं था इनके पास उनके लिए, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी में बारी करते हैं तो कॉफिन में एक जगह होती है हेड, एक साइड होता है, यू नो, फीट दूसरी तरफ होते हैं, तो वो सिग्निफाइड होता है कॉफिन में. इन्होंने ऐसे ही एक बॉक्स बनाया
और हेड और फीट का साइड लिखना पड़ा एंड शी फेल्ट वेरी टेरिबल अबाउट इट दैट हम पैसे की वजह से उनको ठीक से बरी भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनको लेकिन अपनी मदर की सारी बातें याद थी कि वो हमेशा उनके बेड साइड पे बैठ के बोलती थी कि मुझे घर बनाना है, मुझे करियर अच्छा करना है, मुझे ये करना है, बट हमेशा बोलती थी कि आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, बाद में करूंगी, ये मैं बाद में करूंगी। और उन्होंने कभी उस वक्त नहीं किया। अगर वो उसी वक्त अपनी जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेती तो हो जाता। तो उससे सीख के लिज मुरे हमारे लिए लिख रही हैं दैट यू डोंट हैव टाइम टू फॉलो द ड्रीम्स। अगर आपके सपने हैं तो आज ही एक्शन हो जाना चाहिए। एटलीस्ट लिख तो ले हम, इफ नॉट एनीथिंग, अगर वो वाला एक्शन नहीं ले पाए, बट दैट एक्शन कैन बी एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग अबाउट इट. What is your dream? What is that plan of action? And what is that, like that success that you want in your life? At least from there we can start, but the time is now. Okay, so she's mentioned it that life is short. Current life expectancy is 24,869 days, whatever it means in number of years. ओके तो इसका डिवीजन करके हमको फटाफट निकालना पड़ेगा। कोई भी मैथ्स में बहुत अच्छा हो तो बताइए कि कितने साल हम जीते ऑन एन एवरेज दिन के हिसाब से। So it says that while some of us will live more days, मतलब on an average है इतनी लाइफ, तो हमारे पास बिल्कुल एक भी दिन नहीं है वेस्ट करने के लिए, एक मोमेंट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। It is now or it's never. Okay, it's now or never. If you don't do it now, you will keep putting it off and you'll never do it because the time is now, because the next moment will become now. फिर से हम बोलेंगे कल। So इसलिए कहते हैं ना tomorrow never comes, because tomorrow actually never comes. The time is now. Yes. Yeah. Someday is a disease that will take your dreams to the grave with you. Timothy Ferris, author of the 4-Hour Work Week. सुन लिया, someday is a disease. जब बोलते हैं ना I will do it someday, I will देखना, one day I will do this, one day, someday. Someday is a disease that will take your dreams to the grave with you. मतलब मर जाएंगे someday करते करते। Simply realizing that no one else is going to make your dreams come true is a big step. Your boss, friends, partners, family, and children cannot live your life for you. You are responsible for creating a life that makes you happy and fulfilled. No one else can do that for you. ये मैं अपने एक फ्रेंड को ना समझाते समझाते थक गई हूँ, ये वाली चीज जो इसमें लिखी हुई है। पहला तो इफ एनीबडी कैन डाउनलोड द PDF ऑफ द 4-Hour Work Week, इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग टू मी, लेट्स ऑल रीड इट। ये जो बुक है 4-Hour Work Week, and let's learn from this. I'm sure there are some great words of wisdom, क्योंकि मुझे ये कैच फ्रेज ही बहुत अच्छा लगा इनका, that someday is a disease, so I would love to read more from this author. So देखते हैं, अगर ये अवेलेबल है YouTube पे तो हम वैसे शेयर कर लेंगे ऑडियो बुक के फॉर्म में, नहीं तो अगर PDF मिल जाता है, nothing like it. I mean, this is for sure, otherwise I'm ordering it from Amazon for sure. So it says that simply realizing, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरी खुशी तब होगी जब ये पर्सन ऐसे कर देगा, मेरी खुशी तब होगी जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी खुशी तब होगी जब 2 बेटियों के बाद हमारे घर में एक बेटा आ जाएगा, मेरी खुशी तब होगी जब मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी खुशी तब होगी जब मेरा बिजनेस विल रीच दिस लेवल. So we are always basing our happiness on something which is outside of ourselves. Never works. ओके, बिकॉज जैसे ही वो चीज आएगी वैसे ही वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही बेटी की शादी होगी फिर उसके बाद कुछ और हो जाएगा कि उसके इन लॉज बहुत प्यार से रखे उसको, जैसे ही वो हो जाएगा फिर अब उसका बच्चा हो जाना चाहिए। सो इट विल नेवर एंड। क्यों हम अंदर अपनी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं ढूंढते हैं, है ना? सो इसमें सिंपली रियलाइजिंग दैट नो वन एल्स इज गोइंग टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज अ बिग स्टेप. योर बॉस, योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन कैनॉट लिव योर लाइफ. ओके, आपका लेन अलग है, उनका लेन अलग है, ठीक है? दूसरा स्पाउस है, उसका लेन अलग है, ग्रैंड चाइल्ड का लेन अलग है. आपकी खुशी और सक्सेस उनकी खुशी से डिफाइन नहीं हो सकती है.
ठीक है, आप अपनी लेन में अपनी सक्सेस ढूंढो और पीछे मुड़ के देखो, हाउ मच हैव आई ग्रोन. यू आर योर ओनली कंपैरिजन इन लाइफ. Okay, you are your only barometer and a check that what have I done, no matter whosoever is doing what, so this we need to realize that you are responsible for creating a life that makes you happy and fulfilled. No one else can do that for you. This is one thing that we need to realize. और उसके लिए and जब भी हम ये सोचते हैं कि वहां से कांटेक्ट मिल जाए, उसका सोर्स लगा लो, उसका वो मिनिस्टर का सोर्स लगा लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करो. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे हाई होती है, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन, द राइट सिचुएशन, that circumstance, and if that particular success has to come through somebody, through a person, that person will appear by the law of attraction. Universe knows कि उस इंसान का आपकी जिंदगी में आना जरूरी है to take you for that next big step. That person automatically will appear in your life. Okay, अपने ऊपर वर्क करने से, किसी और को वर्क करा के उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरा ऐसा नहीं किया, उसने मेरा ऐसा नहीं किया, ये कभी भी हैप्पीनेस और सक्सेस नहीं लेके आए. क्योंकि आपकी खुशी उस पर्सन से बेस्ड है. वो पर्सन अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको आपसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आपकी जिंदगी खराब होती जा रही है. तो इसीलिए सेल्फ लव की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. सो मिरर वर्क हेल्प्स अस टू डू दैट, टू गेट कनेक्टेड. मेडिटेशन विल हेल्प यू टू डू दैट, टू गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ. 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करो. आप देखना, आपको ऐसे इंस्पिरेशन आइडियाज आने लग जाएंगे. और वो उसी वक्त नहीं आते हैं, वो बाद में भी आते हैं. मैंने आपको बताया ना कल, जब मैं जैसे ही घर में आई रंग द बेल ऑफ माय हाउस एंड माय सन ओपन द डोर फॉर मी, एंड पूरे टाइम मुझे ये था, फिर मैंने अपना लैपटॉप बैग रखा, वो किया, ये किया, एंड देन आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग वो 369 369 369. पता नहीं कैसे मन में चल रहा था, जबकि मैं तो बहुत एक्शन पैक्ड डे था. इट वाज नॉट दैट. सो वो मेडिटेशन जो मॉर्निंग का किया हुआ था, उसके कारण वो हंच आ रहा था, जो सिट एंड राइट 369, सिट एंड राइट 369. फिर मैंने आउट लाउड बैठ के एक लिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मर्क्यूरी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू दिस दैट, जो जितना भी मुझे लिखना था, 5 एलिमेंट्स, बहुत बार. सो 369 टाइम्स एट दैट. जब मेरे पैर शेक कर रहे थे कल, literally, I was so tired in the evening around 6:30 that I went to Punjabi by nature to have coffee. And इतने, मतलब it was a bar, और वहां पे मैं literally I took off my heels और मैं पैर ऊपर करके जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, उस बार में मैं आलती पालती मार के बैठी हुई थी. The legs were so sore standing like that. Okay, but then it was 369 looked to be a huge number. Okay, at that point of time when I entered the house in the night, but then I did it. It's okay. I loved it, and I was feeling so good after it that I thought that I'm going to share with all of you, because universe is also speaking through me only, to you. So that is how it is. So whatever you have to catch out of me, also you can catch and start practicing. And as much as you can do. I don't intend to make you feel very, very burdened at all. Okay, but love doing it. Anything that we love doing, we are going to, get good fruits out of it. So that's what it is. And work on ourselves, working on ourselves. Never say that my mom-in-law doesn't let me do this, she's like this, so I do it. No, everybody is your mirror image. ओके, सो उनके लिए नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे मन में है तो हमें वो आउटवर्डली वैसे दिखेंगी. ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने उनकी फोटो सामने रख के रोज 5 या 10 पॉइंट लिखे, दैट थैंक यू मम्मी, आप इतना टेस्टी अचार बनाते हो, थैंक यू मम्मी, आपकी साड़ी पहनने का लाइक सेंस कितना अच्छा है, योर वार्डरोब इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मम्मी दैट आपकी वजह से मेरे बच्चे हैं, थैंक यू मम्मी, या जो भी आप उनको बोलते हो, मम्मी, अम्मा, अम्मी. सो जो भी आपका, आप लिखना, उनकी फोटो देख के लिखना शुरू करो. फिर देखना कि वो सेम पर्सन जो आपको आज भाता नहीं है आपकी आंखों को, ठीक है, वो पर्सन बिकम्स द मोस्ट लविंग पर्सन ऑफ योर लाइफ. एंड दैट पर्सन फाइट्स फॉर यू विथ योर हस्बैंड कि इसको ऐसे मत बात करो या अच्छे से, और इसको ये पसंद है तो हम आज यही खाएंगे. ऐसी ऐसी चीजें, मिरेकल्स है. इसी को तो मिरेकल बोलते हैं. ऑर्डिनरी चीजें तो कोई भी कर सकता है. वी आर हियर टू क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ, राइट?
I mean, we are not here to create ordinary things. We always have to create extraordinary things. And to create an extraordinary life, we have to do extraordinary things also. By doing ordinary things, we cannot create an extraordinary life. And that's very, very clear. Okay, so हमारा हो गया. Thank you, Vijay ji. अब पढ़िएगा और Thank you. अच्छा Yes, लगता है yes. आपकी बात सुन के. Sure. Thank you. Thank you so much.